Hello everyone and welcome back to my new watercolor painting. Every Friday I upload new videos on art and craft to explore the creativity. Do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Today I want to show this cardinal bird how to draw and I will teach you from basic drawing to coloring. So let's get started. पहले हम बर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड एंड बॉडी। पहले बॉडी के लिए एक एग शेप ड्रॉ करना है और हेड के लिए स्मॉल ओवल शेप क्रिएट करते हैं। फॉर आइज आई एम क्रिएटिंग अनदर टाइनी सर्कल, देन एडिंग द विंग्स, tail and legs. This is a very basic drawing to create a bird. Now we will add little detail lines to make the bird more beautiful. Coloring. I have taken few colors of yellow ochre, camboge hue, burnt sienna, crimson lake, sap green and ultramarine blue. You have to prepare the color before you start coloring. This is a wet and dry technique I am using. After finishing the first layer, let it dry and add the second wash. This way you have to add more colors. Let's color the eye first. Eye is the important part of every creature, whether it is human, bird or animal. इसलिए आइज़ को पहले कलर करते हैं। आइज़ पे हम थोड़ा ब्राउन शेड और ब्लू शेड भी डालते हैं और इन द मिडल आई एम अप्लाइंग डार्क कलर मिक्सिंग विद बर्न सियाना एंड अल्टरमेरिन ब्लू। आई पे रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा वाइट पार्ट भी छोड़ देना है। The bird is more yellowish in the body, इसलिए बॉडी के लिए येलो ऑकर यूज़ किया। साथ में जहाँ डार्क शेड है वहाँ पे सैप ग्रीन और बर्न सियाना मिक्स करके पिगमेंट को एनहेंस किया है with little shade of orange. In the neck I applied purple color.
कलर एंड अप्लाई इन द विंग्स। बेस लेयर ड्राई होने के बाद हम डार्क से डिटेल करेंगे।